सब लोगों को नजर आ रहे हैं ये जो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन. दिस इज द फर्स्ट लेक्चर इन द ऑनलाइन क्लासेस. Yes, ma'am. मुख्तार, आपने 2 आईडी से तो एंट्री नहीं की. मुख्तार, कैन यू हेयर मी? यस मैम, उससे साइन इन नहीं हो रहा. असल में आप एक काम करें, आप अपना जो जीमेल अकाउंट है आपका पर्सनल, उनसे वो डिलीट कर ले, एक से एंट्री कर ले, तो उसमें फिर मसले आ जाते हैं. वो फिर आपको ऑप्शन देते हैं कि किस आईडी से आप एंटर हो रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपका वो वाला आईडी हमें नजर नहीं आ रहा, बल्कि आप जिससे आप ज्वाइन कर रहे हैं हमें कहते हैं कि ही इज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. तो फिर हम, जाहिर बात है, वी कैन नॉट ट्रस्ट स्टूडेंट्स हु आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे क्रिएट प्रॉब्लम. सो जाहिर बात है, नो टीचर विल एडमिट यू टू द क्लास. तो आप ये फिर CMS के ऑपरेटर से भी आप डिस्कस कर ले कि आपका क्यों इशू आ रहा है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके 2 आईडीज है, तो आप जिससे साइन इन हो रहे हैं उनको स्पेसिफिकली इट शुड बी द ऑफिशियल आईडी. ठीक है, सही है. ठीक है. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट लेक्चर इन द ऑनलाइन क्लासेस. आई होप मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है. Yes, ma'am. I just want to introduce just want to have discussion on the previous lecture, कि जो चीजें हमने डिस्कस की थी. You may remember we started with the definition of communication, that what is communication, and then the process of communication, that it's not a phenomena, it's a process. And in the process we always have components, and then we discuss the components of communication, and in which the context was the external component, but it was the most effective one, right? It affects the whole process of communication. And then if you remember, we discussed that there are types of communication on the basis of channel, which can be verbal and non-verbal, right? In verbal, then there are spoken and written communication, where we use words in order to transfer our messages. Okay? And in non-verbal communication, we discussed about language or para-language, that even silence is a communication. If you aren't talking to somebody, it doesn't mean that you are not communicating. Like, you cannot not communicate. आप अगर सोचते हैं कि I'm not talking to somebody or I'm having no interaction, so I'm not transferring any message, at least you give a thought to the people that. So हम कहते हैं कि silence is also communication. It's a non-verbal communication. You are giving a thought to or idea to the people that you are you communicating much. That if you aren't interested in something, if you do not know, don't know how to talk on that particular topic, or things like that. So it can give an idea to the people. So even silence is a communication, right? And then we talk about the intra and interpersonal communication, that how through interpersonal communication we make our social identities, and how through intrapersonal communication we make our personal. जिस तरह मैंने क्लास में बात की थी. And then if you remember, we talked about barriers of communication in the last class, ठीक है, in which I wasn't feeling well, I remember. So the barriers of communication, as I said, that it can be when we always talk about processes, तो process में हमेशा like components होते हैं, और फिर हर component के साथ अपना कोई मसला होता है, right? So if we discuss all those problems, they are basically the problems or the blockage or the barriers which comes in the process of communication. For example, if we see, it can be related to text or the message that we send, or it can be related to the people or the minds of the people, because we have different perceptions, right? Or receiving or mental filters. Okay? So I have a different mental filter, somebody else has a different mental filter, or the same is the case with everybody. They have different mental filters depending on their background, they have depending on their educational background, their family background,
the culture they live or the society they live. So on the basis of all those, they create a particular mental filter. They receive things differently, right? So if you remember, we discussed that there are barriers which comes in this particular process or the process of communication through channel, text, या फिर किसी भी component से we can cope or we can deal with all those barriers. अगर जाहिर बात है वो physical barriers हो सकते हैं, we can cope with them, we can deal with them easily. But when we talk about all those barriers that are particularly related to people or the participants of the process, ठीक है, जो लोग होते हैं, because we cannot change the minds of the people easily. So for this is particularly a problem because they have different perceptions and realities, or they have different mental filters. तो जैसे वो चीज़ों को देखते हैं, वो चीज़ों को छान लेते हैं, चीज़ों को रिसीव कर लेते हैं लोग. So they have different ideas, and when we come together, we work for a single organization, for a single goal, then there can be a blockage or the hindrances in this process of communication. You might have seen people do not talk for years, for months, to each other in organizations because they have different perceptions. They do not accept others people perceptions and their ideas. ठीक है, तो वो जब अपने तरीके से चलते हैं, जाहिर बात है there would always be blockages to this process of communication and people won't talk to each other, right? So whenever there is a problem, there are always solutions for that. Now, in the process, when we have problems, they are called barriers to communication. How to avoid those barriers to communication? We have a solution for it. And the solution is the 7 C's of communication. And we call it that if we need to have an effective communication, I mean, कि अगर आप कहते हैं कि आपका communication ठीक हो, you interact with people, और लोगों को बुरा भी ना लगे, so that is basically the effective communication, both written and spoken communication. So in order to avoid all those blockages or barriers in this particular process of communication, you have to follow these 7 C's or 7 principles of communication, right? They are called 7 C's of communication because every word start with a C letter, right? तो जब C letter से शुरू होता है, so they are called 7 C's of communication, and these 7 C's of communication are completeness. आप लोगों को ये screen नजर आ रही है? Completeness, conciseness. Yes, ma'am. ठीक है. Conciseness, consideration, concreteness, clarity, courtesy, and correctness, right? So completeness from all, like even the names are very easy. Completeness is basically your message should be complete. It should have all the information or necessary information which is needed or asked by the person. ठीक है. Conciseness आपका एक briefness है. Your message should be brief. It should not have all the wordy expressions. It like you should avoid all the wordy expression. You should not narrate the stories. You should not include all the stories, right? So because people do not have that much time to just sit and read your stories, just sit and listen to your stories, right? So conciseness is basically that. Consideration is to consider people. You should always consider the interest of the people, the desires of the people. You should always listen to people. What is their perspective of a particular idea? So you have to put yourself into the shoes of other, or you have to put yourself into the skin of others, right? क्योंकि whenever you put yourself on somebody else place, you will always go for their stance, what they think about a particular idea, right? So consideration is basically that. Concreteness is your message should be concrete. It should not have some generalized idea, or you should not beat about the bushes, or I can say you should not use some sweeping statements. लोग कहते हैं ना कि असी खबरी गई मतलब that there is no logical reason to justify that, or there is no particular we can say justification for something. There is no fact and
figure for that thing to justify. I'm going to explain one by one in detail, right? You can thoda sa idea dekho. Clarity is basically your message should be clear. It should have no grammatical mistake or grammatical mistake भी नहीं होना चाहिए, but the words you are using should be clear. You need to have an idea of the context for whom you are writing. जो लोग हैं, whether they are educated, uneducated, highly educated, lower middle class, and things like that, right? So you have to look into the people, whether the words you are using or the language or the diction or the choice of the word you are using for a particular proposal, or you are writing a letter, or you are writing an application, or you are speaking to somebody, the words you are using are familiar for them or not, right? So you have to look into the context, or कि आप किसके लिए यूज कर रहे हो, who is the person particularly, where is it, and when are you using that those words, ठीक है? Courtesy is basically the politeness you have. So people who are polite, they always have a particular tone in their writing and speaking. They will always be polite, and they will always be a source of inspiration for people. हम कहते हैं ना देर ज़ियाद खकस्ते. Why? Because they have a courteous nature, and they always keep the same tone in their writing and their speaking. So it's not always necessary कि आप मुंह पे अच्छा बोले, and when it comes to writing आपके एक और tone हो. When people are courteous in real, I mean when they have this particular characteristic in their nature, ठीक है? So they will always have a particular tone in their writing and their speaking. Both in communication, if it is written or spoken communication, in both the medium, they will always keep a particular tone or a courteous tone in their writing and speaking, right? Then the correctness is, it is always your language should be correct, the pronunciation should be correct, right? When you talk to people, you present to people, you always have a particular way of talking, right? Or you need to learn, or you need to observe how to pronounce a thing, how to use this particular word. अगर आप एक language use कर रहे, for example, you are talking to somebody who is your friend or your colleague, so you can use a substandard, even a very informal language. लेकिन अगर आप किसी office में you are writing a letter to somebody, so you should use, or you are talking to somebody who is the chairperson, who is the chairman of the department. So what you need to do is to talk in a particular way, or the words should be correct, और आपका जो pronunciation है वो correct होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि they will create a particular image about you. Moisa Kaliwal Kaliwal doesn't mean that we all are living in villages, but Kaliwal means that it is like they do not know how to recognize a context, that where to talk, or how to talk to people, right? Or जिस context में आप बोल रहे हैं, आप लिख रहे हैं, so whether you are recognizing that particular context. Now, if you see, like for most of the time, whenever I meet students, they will always say, "Madam, ta malada number itu na kamera kuri ta." So, even in Pashto, if you are understanding, so if you understand the context, so even in Pashto, it's not always for English language, it's not always for Urdu language, it is for all the languages, okay? When you are using things, you need to recognize the context, ke ta or taso, there is a particular difference you should use. So the same is the case with every language. You should have a particular tone, or you should use the correct level of the language. Now, starting with every 7C. यहाँ पे कहते हैं कि when we talk about effective communication, one thing that comes in mind, what are the basic principles of effective communication? These principles tells us how your message can becomes effective for your target group. These principles also tell about the style and importance of the message. These principles commonly known as 7 C's of effective communication. Okay? These like 7 C's are basically the checklist
It is the list that you always use for checking your message while you are writing or speaking कि आपका effectiveness किस तरीके से आएगा, whether you are using these principle following or using these principles in your communication both in written and spoken. So it is basically the checklist that you use for your language both in spoken and written communication. ठीक है? So 7 C's में starting with the first one, which is basically the completeness. यहाँ पे कहते हैं completeness. Message receiver, either listener or reader, desire complete information to their question. So in completeness, you should always keep the questions of the reader or the receiver. ठीक है कि उसके जहन में, for example, if I'm having this particular statement or if I'm writing this message, what would be their question? So you should go for all the answers of those questions. और वो questions क्या है? वो questions ये है कि you should have all the information about the 5 W's. For whom you are writing, what are you writing, when are you writing, or when are you speaking, or where are you speaking. ठीक है? So when, why और ये सारी चीजें भी है, लेकिन इसका एक और एग्जांपल भी है कि the text you are creating, it should have all the information, and it is having a very simple example. जब आप when you are inviting people to a wedding or a party or things like that, you make cards. ठीक है? So in that card, you always go for the venue of the party or venue of the event, and the time of the event, and the starting, और कभी-कभी जो खत्म होने का टाइम होता है, you go for all those information और ये सारी चीजें, and what the party is all about. ठीक है? So you need to give all these information, because if you invite people और आप उनको कहें कि we are having a party, you are invited, so where to go, when to go और ये सारी चीजें, they will always make a call or text you कि where to go, how to go, और किधर है, क्या है, किस तरीके से पार्टी है, क्यों पार्टी है, right? So instead of wasting all like that time, or instead of making people text you time and again, people ask you time and again and make call to you time and again, why not to go for a complete message? I mean, like, you need to answer all those questions: where to go, how to go, what is the party about, or when it is, where it is, things like that. ठीक है? तो जैसे ये एक example है. The 5 question method is useful when you write request announcements or both informative messages. For instance, to order merchandise. ठीक है? Make clear what you want, when you need it, where it is to be sent. You might have ordered something. Online shopping तो आजकल बहुत हो रही है. So you might have order. जब आप ऑर्डर कर लेते हैं तो आप उसमें पूरा एड्रेस देते हैं, अपना नाम देते हैं, घर का एड्रेस देते हैं, the thing that you want, sometimes the code of the product that you want. ठीक है? So उस ऑर्डर में पूरा एक इंफॉर्मेशन होता है, where you need it, when you need it, and what you need. ठीक है? तो like they understand, or then they make a call, और फिर वो आ जाते हैं वो कोई चीज, right? So the same is the case with every message. It should be complete, right? It should have all the information that is necessary. So it is for all types of communication. अगर आप application लिख रहे हैं और उसमें फिर if it is a request for something, you want to have to make a request to your chairman. तो जब आप रिक्वेस्ट करते हैं और आप किसी और चीज के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, and you do not have much information, so they will ask you, they will make office, और वो फिर पूछेंगे कि ये किस चीज के लिए है. So always when you are making a request, when you are ordering something, or when you are writing, or when you are speaking, please go for all the information, क्योंकि completeness of the message is always important, and it's always it saves time of the people as your time and your time. Conclusion में फिर आप ये यहाँ से पढ़ सकते हैं. At the end we can say that you must provide him all the necessary information as requested by him, answer all the questions and things like that. The second one is basically the conciseness. Conciseness बहुत important है.
और आजकल तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जब आप when you start narrating the stories people get bored. Why? Because they do not want to listen to extra explanation. और आजकल तो वैसे भी जहनों पे बोझ है, लोग कुछ भी नहीं सुन सकते एंड दे नीड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन हमने ऊपर इससे पढ़े कि द मैसेज शुड बी कंप्लीट, और फिर सेकंड वन इज द कॉन्साइसनेस। कॉन्साइसनेस का मतलब है ब्रीफनेस। कंप्लीटनेस में हम ये कहते हैं कि योर मैसेज शुड बी कंप्लीट, यू शुड प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने कहा कि इफ यू आर ऑर्डरिंग और इफ यू आर मेकिंग प्रोडक्ट और somebody, फॉर एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी और फिर वहां पे somebody asks you and you are making some product, somebody asks you that what is the price of this particular product or what are the characteristic of these products, so you need to go for the whole information, ठीक है, all the information, so you can make him decide one thing, ठीक है, either they will buy or not buy or things like that, राइट। तो कंप्लीटनेस में ये चीज भी है। यहाँ पे है कॉन्साइसनेस, यू शुड बी ब्रीफ एंड यू शुड बी कॉन्साइज, ठीक है। इन दोनों का मतलब ये है कि एक तरफ हम कहते हैं कि कंप्लीट हो तो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी अगर आप दे सकते हैं तो दे दे। एक तो हम यहाँ पे कॉन्साइसनेस कहते हैं कि इट शुड बी ब्रीफ। सो बोथ। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि अगर मैं कोई एग्जाम लूंगी भी तो सो माय क्वेश्चंस वुड बी लाइक दिस के एक ओपन बुक टेस्ट होगा, उसी में से आई आस्क यू के हाउ टू bring completeness and conciseness in one single text, okay, and go for an example. So you have to write an example for me that how to bring completeness and conciseness in one single text and go for an example. और आप एक example देंगे कि इसमें देखिए आप conciseness भी है और message complete भी है, ठीक है। So the exam जो है वो I will share a document with all of you कि अभी इन लोगों की मीटिंग हुई है and they were saying कि you should take an exam like this कि open book होने चाहिए या फिर MCQs होने चाहिए। So I will have an open book test mid term के लिए, final term के लिए then we will decide something. So I was talking about conciseness, that your text should be complete as well as concise at the same time. अब conciseness, how to bring conciseness or briefness in your text, there are so many ways, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि how to bring conciseness. Conciseness means convey the message by using fewest words, ठीक है। few words होने चाहिए लेकिन आपका मैसेज कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। few words, how to bring few words, ठीक है। conciseness is the prerequisite to effective business communication. As you know that all businessmen have very short time, hence a concise message save the time and expenses for both the parties. As I said कि complete भी होना चाहिए और एक ये है कि conciseness भी होना चाहिए। Now यहाँ पे एक दो तीन तरीके बताएं कि how to achieve conciseness is by avoiding wordy expressions, include only relevant material, avoid unnecessary repetition. Now these avoid wordy expressions है क्या, right? So wordy expressions हमारे पास दो तीन हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने पढ़े हो we have phrases and then we have clauses and then we have sentences, ठीक है। phrases are हम अगर phrase यूज कर रहे हैं तो कैसे यूज कर रहे हैं। the clause that we use, you might have read about relative clauses. I'm going to discuss relative clauses as well, though it's a part of your previous subject, लेकिन I know कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। So clause जो है पढ़ा है, relative clause पढ़े। Yes, ma'am. उसमें क्या था, इन relative clauses आप लोगों ने defining और non defining, restrictive और non restrictive clauses होते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये पढ़े तो बहुत अच्छा होगा, आज बहुत इजी होगा मेरे लिए, ठीक है। Defining and non-defining पढ़े हैं। Very good, excellent. I'm going to discuss that as well. Now, like when और फिर अगर प्रेसे राइटिंग आप लोगों ने पढ़ा हो तो प्रेसे राइटिंग में यही चीज होती है कि आपने जितना टेक्स्ट कॉन्साइज करना होता है इतना ही कॉन्साइज कर ले, बिकॉज दिस इज द प्री रिक्विजिट फॉर राइटिंग अ प्रेसे।
क्योंकि प्रेसे में समटाइम यू आर गिवन अ पैसेज एंड यू आर आस्क्ड टू राइट अ प्रेसे, तो फिर उसमें दो तरीके होते हैं, and one is the deletion method and the other one is the retention method. Deletion में आप क्या करते हैं कि you go for deleting the extra explanation or the wordy expression and get to the main idea, write the main idea, sometime in your own words, sometime the same words that used in the same particular or the passage that is given to you. अब अगर retention method में क्या है, in the retention method we read the text for one time, for the second time, and then for the third time, and then we keep the text aside, we write from our own understanding, ठीक है. So वो retention method है कि आपके जहन में जो idea retain होता है, जो idea रह जाता है कि what the text is all about. तो डिलीशन और रिटेंशन मेथड में ये मसला होता है कि डिलीशन मेथड जो है वो तो आपको एवरेज नंबर्स मार्क्स मिल जाते हैं, मतलब अगर आप उसके 10 मार्क्स है तो एटलीस्ट यू कैन गो फॉर 5 और 6 मार्क्स और 7, लेकिन नॉट मोर देन दैट. रिटेंशन मेथड बड़ा इफेक्टिव है, यू कैन गो आइदर फॉर 10 और आइदर यू कैन गो फॉर 0, राइट. तो इसमें बोथ एक्सट्रीम्स है, उसमें एवरेज नहीं मिल सकते आपको, क्योंकि आपका जो आइडिया है जो आपके जहन में रिटेन हो जाता है, आइदर इट इज द करेक्ट वन और इट इज द रॉन्ग वन, ठीक है. सो कॉन्साइसनेस उसमें बहुत जरूरी है, हाउ टू मेक or how to write a concise text or how to go for a press is basically to make the thing precise, ठीक है. हाँ, make the text concise. तो उसमें फिर हम ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. और आपका जो आने वाला टाइम है, यू विल ऑलवेज हैव टू मेक प्रेसेस, क्योंकि जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यू विल वर्क, यू विल ऑलवेज गो फॉर मेकिंग प्रेसेस. सो प्रेसेस जरूरी नहीं है कि आपको पैसेज दिया जाएगा, बल्कि आपको एक 40-50 पेजेस दिए जाएंगे और आपको कहेंगे कि गो राइट अ समरी फॉर दिस. तो वो असल में 40-50 पेजेस के, अब व्हेन यू आर मेकिंग अ समरी दैट इज बेसिकली द प्रेस यू आर मेकिंग, ठीक है, for 40 or 50 pages. The same is the case with every we can say proposal writing. जब आप proposal लिखेंगे या फिर आप report लिखेंगे for a particular investigation that you do, जब आप, जाहिर बात है आपको projects मिलेंगे, फिर उन्हीं projects में you will be asked to make a proposal, और फिर proposal accept होने के बाद if you do the research, if you test the thing and then you analyze the thing, so you will always go for writing the report that how have you conducted this particular research. तो वो जो आप पेपर लिखते हैं या फिर आप जो प्रोजेक्ट लिखते हैं, वो जो लिखने का तरीका है, दैट इज बेसिकली द रिपोर्ट यू आर मेकिंग. तो वो एनालिटिकल रिपोर्ट होता है. सो इन फॉर राइटिंग दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट यू विल बी रीडिंग 16 or 17 papers of other people who have already done work on that. तो वो जो आप पढ़ते हैं, so you will always be having the need of प्रेसे कि आप क्या उसको कैसे प्रिसाइज कर रहे हैं. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कॉन्साइसनेस के वर्डी एक्सप्रेशंस हमारे पास कौन कौन से होते हैं. वर्डी एक्सप्रेशन, जी मैम, कुछ पैराग्राफ्स ऐसे होते हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन लाइक लाजमी होती है, अगर हम उन्हें एक्सप्लेन ना करें तो वो फिर अपना मीनिंगफुल कन्वे नहीं करते. तो फिर हम उसमें कॉन्साइसनेस को देखेंगे या फिर एक्सप्लेनेशन को, क्योंकि इफेक्टिवनेस फिर उसमें एक्सप्लेनेशन की वजह से आ रही होती है. हाँ ठीक है, सही है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इट शुड बी ऑन द लाइक यू शुड नॉट अवॉइड कंप्लीटनेस. आप कंप्लीटनेस को डैमेज नहीं कर सकते, यू शुड हैव कंप्लीट मैसेज. लेकिन जो मैं बताती हूँ कि हाउ टू अवॉइड वर्ड एक्सप्रेशन, इट्स नॉट ऑलवेज कि आप हमेशा एक बहुत ही छोटे मतलब उसमें पैराग्राफ में या फिर सेंटेंस में अपना मैसेज कन्वे करें. समटाइम यू नीड एक्सप्लेनेशन, देन यू हैव टू गो फॉर एक्सप्लेनेशन इवन इफ इट इज लेंथी, राइट. इफ अगर उसमें वर्ड्स भी बहुत सारे आ रहे हैं बिकॉज दे नीड words, right, in order to explain that thing, but at least we can try to achieve conciseness to some extent. तो जो some extent के लिए हम कह रहे हैं, it is basically avoiding those wordy expression. और मैं जो बताती हूँ कि wordy expression कैसे आते हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोग अगर एक लफ्ज एक टर्म है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ टर्म, तो अगर वो टर्म आप
आपके पास उनके लिए एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे, किसी को पता नहीं है, सो यू शुड ऑलवेज गो फॉर द एक्सप्लेनेशन के लोगों को पता हो, राइट? लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। तो वर्डी एक्सप्रेशन हमारे पास एक जो मैंने कहा कि फ्रेजेस या फिर हमारे पास क्लॉजेस है, तो फ्रेज या जो सेंटेंसेस होते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जो बड़े रिडंडेंट होते हैं। यू माइट हैव read about adjectives and adverbs, ठीक है? now the adjectives कैसे यूज होते हैं, तो हमारे पास जो adjectives यूज होते हैं, उन adjectives को हम कैसे यूज करते हैं, whether they are redundant. redundant का मतलब ये है कि वो सेंटेंस में if we are using one thing in a sentence for 2 times or it is having the same meaning, so we should not use that particular adjective in that sentence, okay? For a noun, adjectives हम nouns के लिए use करते हैं, so if that particular noun is having the same idea, why are we using that adjective for that? Right, so redundant sentences तो मैं बात करूंगी कि what are redundant sentences, लेकिन हमारे पास phrases कौन से हैं? Now see, we have some phrases. I want to open a tab. ये आप लोग को नजर आ रहा है? Yes, ma'am. हाँ, ये ठीक है, ये हमारे पास व्हाइट बोर्ड है। जैसे मैं कहती हूँ नून, नून का मतलब क्या होता है? इट्स ऑलवेज 12, राइट? इट्स ऑलवेज 12 PM, ठीक है? सो अगर इसकी जगह मैं कहती हूँ 12 नून, right? So this is redundancy, because noon is always, we have like taken or we have this perception कि noon जो है it is always 12 PM. So if we are using 12 noon, so this 12 is a redundant one, and 12 is basically the adjective we are using with this particular noun, right? So 12 noon is basically a redundant one. You should use noon only, right? And sometimes we say the same is the case with midnight. Midnight क्या है? Midnight is basically 12 midnight, right? So अगर हम use करें 12 midnight, so ये 12 midnight is basically the redundant phrase we are using, right? अब एक और example है, sometimes we use 3 AM in the morning, right? 3 AM in the morning का क्या मतलब है? Morning is AM is basically 3 AM is basically morning, ठीक है? So use only 3 AM, right? Or 3 in the morning, at 3 or 3 AM, right? So by using such adjectives we are using some redundant phrases. और ये जो redundant phrases होते हैं, it is like if you see जो हमारे पास CSS और PMS के exams होते हैं, वो उनमें यही चीजें होती हैं कि when you are given some particular we can say sentences, और फिर आपको कहते हैं कि correct these sentences, so आपको लगेगा कि इस sentence में तो कोई मसला नहीं है, but there will always be a redundant word use, या एक ही redundant word use हुआ होगा, either it will be adjective or either it will be an adverb, right? अगर आप लोग अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको और भी आप एनालाइज कर ले, that how the redundancy, how can we remove redundancy, try to go and search that all the past papers or the pressé papers of CSS papers, वो सारे नेट पे है। तो आप अगर देखेंगे उनमें जो करेक्शन का पार्ट होता है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यू विल सी आप लोगों को वो सेंटेंसेस बिल्कुल करेक्ट नजर आएंगे, लेकिन वो करेक्ट नहीं होंगे either by using one adjective or adverb either in the wrong place, or either position उसका wrong होगा, or either it will be a redundant one. उसका मतलब जो है, जैसे हम कहते हैं quite enough, right? So enough is quite, ठीक है? हम quite इसके लिए use नहीं कर सकते। So इस तरह की चीजें, जैसे हमारे पास adjective है जो phrase बनाते हैं हमारे पास, when we use it with a noun, so it means
it is making a noun phrase. ठीक है, तो वो जो noun phrases है, try to analyze them कि whether we are using it in a redundant way or not, right? जैसे हमारे पास एक और example है circle around. Circle around is always circle. Circle हमारे पास ही round चीज है, तो circle around नहीं use करना चाहिए. और हम sometime we say that end result, right? End result is always at the end of something. ठीक है, so why not use result? Simply result. ठीक है, क्योंकि result is always at the end of something. When we analyze things at the end, we get to a result, right? अब हमारे पास एक और चीज है. When we talk about new idea, right? New idea is basically innovation, right? जब आप किसी चीज को innovate करते हैं, so that is basically new idea, right? हम हमारे स्टूडेंट्स या फिर कभी कभी मैं भी यूज करती हूँ, बट इट इज नॉट करेक्ट. जब मैं इनोवेशन यूज करती हूँ, मैं कहती हूँ न्यू इनोवेशन. न्यू इनोवेशन is a redundant one because innovation is always a new idea. So why new innovation? Innovation is something which is new for us. जब आप कोई चीज क्रिएट करते हैं and that is new for you and for the people, it is so innovation का जो the meaning itself is new idea. So do not use or go for the new innovation. ये जरा टाइपिंग में Well, we say, ma'am, हाँ जी, we often say it's an old invention. sorry, We say in our language that it's an old invention. it's an You old use and innovation. Yeah, it is used. I even in movies हाँ, तो आप क्या like कहते हैं? old invention. इन्वेंशन वो कहते हैं, ये इनोवेशन है. दैट्स अच्छा, इन्वेंशन. innovation. हाँ, ये Okay. इनोवेशन है. ठीक है. हम एक और सेंटेंस है, एक और फ्रेज है दैट वी यूज इज हम कहते हैं रिपीट. रिपीट अगेन. अब ये हम बहुत यूज करते हैं. यू आर रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन. व्हाई अगेन एंड अगेन? either go for repeat or again. You are telling it again, right? Or you are repeating it. Okay? So you need to go for one word. Or sometimes we say the future to come. Sorry for my typing speed, but I have to explain it. The future to come is basically, future is always the time to come. Okay? So why not the future only? Because future is always the time to come. ठीक है, तो हमारे पास ऐसे phrases होते हैं जो redundant होते हैं. So we should avoid all those phrases. So at least अगर हम if we are like removing one word, उसमें थोड़ा सा मतलब जो count है, the words counting है, उसमें हम remove कर सकते हैं. And you will see this thing very helpful in your proposal writing. कभी आप लोगों ने सुना होगा there was a project दुर्शल, और उन लोगों उसके लिए स्टूडेंट्स को दिया हुआ था कि राइट अ प्रपोजल, और उसमें फिर ये भी था कि पर्सनल स्टेटमेंट लेके, जैसे when you are applying for scholarships you are always asked to write a proposal or write a personal statement for that particular scholarship. So what you need to do कि कभी कभी they give some limitations. ठीक है, and उन limitations में ये होता है कि when you are writing a personal statement you go for this particular information. ठीक है, आपने सिर्फ इन्हीं information को provide करना होता है, and you should have this limitation, I mean like 250 words, right? So how to conclude your whole statement? And you might have seen when we start narrating about stories about ourselves, we do not know how to start or how to end that. ठीक है, और जब हम शुरू कर लेते हैं तो फिर हम पता नहीं 6-5 पेजेस तो लिख लेते हैं, and when we count the words तो वो 3000 words हो गए. ठीक है, so 250 words, और फिर उनमें सारी अपनी कहानी लिखना and effective लिखना, that needs to have a concise idea, okay, or conciseness of the words. So
One thing is that you can always go for removing or deleting such phrases, and the other one is one word substitution. And you might have heard one word substitution, जैसे आपके पास GAT की book है, जैसे SAT की book है. You might have appeared in so many exams before getting into engineering. तो जो जितने भी हमारे पास जैसे बुक्स है, इनमें से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लिया. और देयर इज अनदर सिंपल बुक इट इज अवेलेबल विद एवरीवन, exploring the world of English, right? So वो जो उसमें one word substitution है, I'm suggesting this book क्योंकि इसमें बहुत अच्छी collection है. Try to learn those one word substitution because they are very necessary. When you start writing, it will help you a lot because you can just avoid writing a whole sentence and even a whole paragraph by just having one word. तो जब एक लफ्ज के साथ अगर आप पूरे पैराग्राफ को, पूरे सेंटेंस को रिप्लेस कर सकते हैं, why not using that particular word instead of using that sentence? Or so it will always you will always have the opportunity of deleting a sentence or replacing a sentence just by one word. तो एक तो count कम हो जाएगा and it will help you a lot in writing proposal and writing personal statement. जब भी मेरे पास स्टूडेंट्स आ जाते हैं and when they have written their personal statements, they always have this problem कि मैडम हमें तो 250 words में चाहिए और ये हमने जो लिखा है ये 1000 है, ये इतने words है. So it is always because of the redundant phrases, because of the overuse of definite and indefinite articles. हमें articles का पता नहीं होता because they are determiners. When something is specific, we over specify things, right? So the overuse of definite articles is also try to avoid that because वो भी redundant phrases में आता है, right? Try to avoid, try to learn one word substitution. एक वो तरीका हो गया. एक ये जो phrases हम use करते हैं, एक writer है, he says that vigorous writing is concise. Vigorous writing हमेशा concise होता है, ठीक है? A sentence should contain no unnecessary words, a paragraph no unnecessary sentences. और इसका मिसाल कैसे है? I mean like how can you explain it that जैसे हम कहते हैं कि पैराग्राफ के साथ हम unnecessary sentences नहीं होने चाहिए. The example is that when you are drawing something or when you are making a picture of something and you add an extra line, तो वो सारा you reshape the whole drawing. और वो ड्राइंग का पता ही नहीं चलता कि वो आपने क्या ड्रा किया हुआ है. इफ इट इज द शेप ऑफ अ मशीन और उसमें एक एक्स्ट्रा लाइन आप ड्रा करते हैं तो वो सारा जो इमेज है यू जस्ट रीशेप और उस द पर्टिकुलर ड्राइंग, ठीक है? और एक मशीन है, इफ यू आर मेकिंग एनी मशीन, ठीक है, यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ मशीन, सो जब आप कंस्ट्रक्ट करते हैं उसमें कोई एक्स्ट्रा पार्ट लगाते नहीं, क्योंकि वो तो आप डैमेज कर लेते हैं उस चीज को, उसकी कोई जरूरत नहीं है. सो द सेम इज द केस विद एवरी पैराग्राफ एंड एवरी सेंटेंस. यू नीड नॉट टू यूज रिडंडेंट वर्ड्स in a particular sentence, and you should always delete redundant sentences from paragraph because इसका same एक जो मैंने आप लोगों को example दिया है, it is having the same example कि you are just adding an extra part to a machine, ठीक है? तो redundancy इस वजह से भी आप खत्म कर सकते हैं कि when you delete the extra explanation or the extra sentences that is not needed. I was talking about phrases and clauses, if you remember. Right? So phrase तो यही है. Clause क्या है? You might have read about, as I asked you, कि आप लोगों ने पढ़ा होगा. तो जो phrase होते हैं, जैसे हमारे पास कुछ ऐसे phrases होते हैं जैसे मैंने डिस्कस किया. अब clauses के कौन से होते हैं? Clauses में हमारे पास स्पेशली जो relative clauses है, right? I'm happy that you have learned. Relative clauses में फिर हमारे पास defining होते हैं and non-defining. Non-defining और defining, in defining को हम restrictive भी बोल सकते हैं. Sorry. Defining और non-defining को हम restrictive and non-restrictive भी बोल सकते हैं.
नॉन रिस्ट्रिक्टिव का मतलब ये है कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यू कैन डिलीट इट, ठीक है। सो नॉन रिस्ट्रिक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव इज बेसिकली डिफाइनिंग दैट पर्टिकुलर नाउन, और नॉन रिस्ट्रिक्टिव का मतलब ये है कि वो उसको डिफाइन नहीं कर दिया, दैट्स एन एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन, इवन यू कैन रिमूव दैट फ्रॉम द सेम सेंटेंस। लेकिन रिस्ट्रिक्टिव में हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन होती है, बिकॉज दैट द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट सेंटेंस, ठीक है। अब इसमें कोई आप मुझे एक एग्जांपल बता दीजिए। आई वोंट बी टॉकिंग ऑल द टाइम, जिनको पता हो वो मुझे बताएं। My brother who lives in America is a doctor. ठीक है, वो specific brother जो अमेरिका में होता है. माय ब्रदर, Comma who lives in America. माय ब्रदर, comma, who lives in Who lives in America, America, comma um, is a doctor. is a doctor, right? So ये कौन सा है? It is basically the non-restrictive, ठीक है। अब इसको हम restrictive भी बना सकते हैं। How? Ma'am, this is restrictive. This is defining. No, How? sorry. No. This is if we skip who lives in America, then we can change the nature. Huh. See, this is like a non-restrictive because we are having a comma. जब commas में, when we put a comma after the this particular subject, ठीक है, तो इसका मतलब ये है and when we have a comma after like that phrase, तो इसका मतलब ये है कि this particular clause is a non-restrictive one. It is just an extra explanation. If I say my brother is a doctor, so it can stand alone, ठीक है, and it is having a meaning. लेकिन इसको दो तरीकों से हम यूज कर सकते हैं. When we put a comma before and after this particular clause that we are entering into this sentence, it is having it is non-restrictive because you can delete it, right? Because that becomes an extra explanation for this sentence, ठीक है. लेकिन अगर मैं कहूँ कि my brother who lives in America is a doctor, ठीक है, इसके बाद ये कामा हम हटाए, ठीक है, ये कॉमास हम हटाए, तो इसका मतलब क्या होगा? अब इसका मतलब क्या है और उसका क्या मतलब होगा? आपने तो सेंटेंस बता दिया। अब ये डिफाइनिंग है, जब कॉमास हटाएं तो फिर डिफाइनिंग बन जाता है, लाइक नेसेसरी इंफॉर्मेशन होता है ये फिर, और जब कॉमास मौजूद होते हैं तो फिर अननेसेसरी इंफॉर्मेशन होता है वो। ठीक है, लेकिन मैं कहती हूँ कि व्हाट इज दिस, आई मीन द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस का क्या मतलब बनेगा? माय ब्रदर हु लिव्स इन अमेरिका इज अ डॉक्टर। अभी दिस इज नॉट अब फॉर एग्जांपल I have lot of brothers, but that specific brother who is in America, now this is defining him. हाँ So हाँ, ठीक है। और इसका क्या मतलब होगा? दिस सेंटेंस का क्या मतलब होगा? कि जब उसमें तो कॉमास मौजूद होंगे, हाँ हाँ, ठीक है, जब कॉमास मौजूद होंगे तो फिर अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, लाइक देयर इज नो नीड टू इंक्लूड दिस इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि आपका जो आपका एक भाई है शायद, और वो डॉक्टर है, ठीक है, वो अमेरिका में रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, तो आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज अननेसेसरी एंड वेरी गुड, एक्सीलेंट, दैट वाज अ गुड एग्जांपल. So you see, like all those non-restrictive clauses that we have like in sentences, we can remove them by bringing preciseness in words, ठीक है. So by bringing preciseness in a paragraph or by bringing preciseness in we can say in even a sentence, ठीक है. तो अगर मैं कहूँ my brother is a doctor, that is more, लेकिन then you have to look at the context, कि context में आपसे क्या पूछा जा रहा है.
So you have to go for that. Then you can remove such non-restrictive clauses from sentences when it is like given in a paragraph. तो पैराग्राफ में आपने जरूर देखना है कि उसमें आपसे क्या पूछा गया है, ठीक है। अब एक और चीज जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि प्रिसाइसनेस जो है वो उसका कोई दूसरा एग्जांपल दे दूं आप लोग को, क्योंकि नॉन रिस्ट्रिक्टिव का मुझे इतना अंदाजा हो गया कि यू नो दैट हाउ नॉन रिस्ट्रिक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव जो है वो कैसे हम हटा सकते हैं। दे दें मैम, क्या दे दें एग्जांपल। ठीक है, अगर आप लोग को यारा तो आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल। तो अब ये देखिए ना, ये आप लोगों ने हम मतलब you who lives in America, you can just delete that particular phrase. मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे the book which was out of print is all the information or includes all the information that you need, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देखिए, which was out of print. Now this particular phrase, right? This particular phrase is basically the non-restrictive one. Okay, so you can delete it from here and you can go for the preciseness of the sentence. But you have to look at the context of the thing as well, कि आपको जो passage दिया गया है whether that is necessary or not, ठीक है। अब restrictive कौन से हैं? The umbrella. Restrictive कौन से है जहां से आप delete नहीं कर सकते, ठीक है। So restrictive में जैसे मैं कहती हूँ the umbrella, the umbrella that I bought last week is already broken, right? So अब यहाँ पे आप देखें, this is defining the umbrella that I bought last week is already broken. अब मैं कहूँ the umbrella is already broken, so it doesn't make any sense. So this particular information is necessary for it. It is the defining information that we have in this particular sentence. So over here you cannot delete that. But what I was talking about in conciseness, that you can go for the deletion of non-restrictive clauses that sometime we give, जैसे which से शुरू होते हैं, जैसे sometime it can be start with the who, because who starts for who, we use who or this relative pronoun for living one, right? Or that जो है sometime it can be used for the group, right? Or which जो है it is specifically used for things, ठीक है। So restrictive और non-restrictive clauses जो हैं, इनमें से जो non-restrictive है, we can remove those non-restrictive clauses to bring conciseness in the text, ठीक है। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जहाँ से हम कर सकते हैं, और we can at least we can try to bring somewhat conciseness, or we can say briefness in our text, ठीक है। एक और एग्जाम्पल भी है, the woman who visited me in the hospital was very kind. So the woman was very kind to who was very kind. So who visited me in the hospital is basically that is the explanation which is needed there. अब एक ये एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा क्या है कि एक हमारे पास जो हम यूज करते हैं नॉर्मली, जैसे कुछ ऐसे expletive constructions है। One is that we need not to use some redundant phrases. एक जो हमारे पास non-restrictive clauses है, we can remove them somewhat, right? And we can bring preciseness and briefness in the text. तीसरा जो हमारे पास एक तरीका है जिससे हम अवॉइड कर सकते हैं वर्डी एक्सप्रेशन, is to avoid expletive
कंस्ट्रक्शन. एक्सप्लेटिव कंस्ट्रक्शन क्या है? एक्सप्लेटिव कंस्ट्रक्शंस, एक्सप्लेटिव कंस्ट्रक्शंस कौन कौन से हैं? जैसे हमारे पास, अगर आप लोगों ने देखे होंगे, वी हैव sometime we start the sentence with there are, there is, right, or there were, or something like that, right? Or sometimes we start the sentence with it is. ठीक है? So जो there are है, there is है, या it is है, ये कुछ ऐसे इसको हम कहते हैं to be, using to be verb. ठीक है? इसको हम कहते हैं using to be verb. जब हम इसको यूज करते हैं, ये टू बी वर्ब जो है, ये हमारे स्टूडेंट्स कभी कभी बहुत यूज करते हैं. व्हाई? एंड दे ऑलवेज स्प्रिंकल देयर टेक्स्ट. मैं स्प्रिंकल का वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ, जैसे हम कहते हैं ना कि बस बखुराक बानी जिस मसाला दुड़े. So the same is the case with the text. ठीक है? That you always sprinkle your text with to be words. हम कहते हैं there are, there is, और ये जो there are है, या there is है, या it is है, ये to be verb है जो हम कहते हैं. To be verb is necessary to use, right? But overuse of it can make the text boring, and it can make the text static. Static इस वजह से because there you do not know which is the subject. अब subject कौन सा है? ठीक है? So try to use the real subject of the sentences. Try to use the real doers of the particular sentence, और उसमें जो doings है, जैसे work है, I mean like the verb जो उसमें नजर आए, right? So the particular verb should be seen in the sentence you are constructing. जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट टू राइट दिस एग्जाम्पल. अगर आप लोग को ये नजर नहीं आ रहा, शायद नजर नहीं आएगा. Maybe we can zoom it for ourselves. हाँ ठीक है, मुझे नजर नहीं आ रहा. मुझे इन चीजों का ज्यादा अंदाजा नहीं है, इसलिए मैं आप लोग को बार बार एक्सप्लेनेशन देती हूँ, हालांकि मुझे पता नहीं है. बट जस्ट फॉरगिव मी फॉर दैट, क्योंकि मुझे जरा फोन और जरा इन चीजों का ज्यादा वो नहीं है, यूज ज्यादा नहीं किया, तो सॉरी फॉर दैट. एक्सप्लेटिव कंस्ट्रक्शन जैसे मैं कहती हूँ कि हमारे पास कौन कौन से है, जो मैंने आपको कहा कि इट इज एक एग्जाम्पल है. ठीक है? एग्जाम्पल पे थोड़ा टाइम लगेगा. देयर आर. मैम आपकी टाइपिंग इतनी भी स्लो नहीं है जितना आप कह रही हैं. अच्छा. देयर आर 25 students who have already expressed a desire to attend the program next summer. Next summer.
next summer. It is they and their parents who stand to gain the most by the government grant. ठीक है, आप लोग को नजर आ रहे हैं? आप लोग जैसे आप लोगों ने कहा कि आप लोग अपने लिए कर सकते हैं, तो यस मैम। ठीक है, तो मतलब इस सेंटेंस का अगर आप लोग देखें, इसका मतलब इस सेंटेंस को आप चेंज कर सकते हैं। हम कहते हैं देयर आर 25 स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी एक्सप्रेस अ डिजायर टू अटेंड द प्रोग्राम नेक्स्ट समर। ठीक है, इट इज दे एंड देयर पेरेंट्स हु स्टैंड टू गेन द मोस्ट बाय द गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, 25 स्टूडेंट्स, क्योंकि असल जो सब्जेक्ट है वो तो ये है, 25 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी एक्सप्रेस अ डिजायर टू अटेंड द प्रोग्राम नेक्स्ट समर। दे एंड देयर पेरेंट्स टेंड टू गेन द मोस्ट बाय द गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, दे एंड देयर पेरेंट्स टेंड टू गेन द मोस्ट बाय द गवर्नमेंट ग्रांट। तो इसमें आप एटलीस्ट सम वर्ड्स दैट यू कैन लाइक यू कैन अवॉइड दोज एक्सप्लेटिव कंस्ट्रक्शन, जैसे हमारे पास देयर है, देयर आर है। सो इन ऑर्डर by going or by using this subject there are, right, this is the subject, but ye jo subject hai, it is not the real subject, right? The real subject is basically it is basically the 25 students. Okay, so you should go over, sorry मैम नजर नहीं आ रहा मैम। ठीक है, शुरू से बताए, नजर नहीं आ रहा था। थोड़ा सा अब ये नजर आ ये रहा है? स्क्रीन ऊपर करे तो 25 students who have already expressed a desire to attend the program next summer. It is they and their parents. मैम समर के बाद एक एंटर प्रेस करे तो ये दूसरा लाइन बन जाएगा। ठीक है, समर के बाद एंटर प्रेस, यहाँ से पता नहीं कुछ हुआ है, जरा बोर्ड में कुछ कभी कभी मसले आ जाते हैं, ये नहीं हो रहा तभी तो मैं कह रही हूँ। इट्स ओके, वी कैन अंडरस्टैंड दिस वे। Right, so it is they and their parents who stand to gain the most by the government grant. ठीक है, by the government grant, अब नजर आ रहे हैं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब इन्हीं सेंटेंस को आप देखिए, आप ऐसे लिख सकते हैं कि 25 स्टूडेंट्स have already, who have, आप ये who भी डिलीट कर लें, who have already expressed a desire to attend the program next summer. They and their parents stand to gain the most by the government grant. ठीक है, तो अब इस तरह के सेंटेंसेस को मतलब यू कैन रिमूव द वर्ब टू बी और यू कैन रिमूव रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, सो जो जितने भी आप रिलेटिव प्रोनाउंस यूज करेंगे, जितने भी आप like you can use relative pronouns in cases, but overuse of relative pronouns can make the text boring or it can make the text static. ठीक है, try to go for the real doers of the sentence, try to go for the real subjects of the sentences, right? So in that way you can make it dynamic. ठीक है, तो डायनामिक सेंटेंसेस ज्यादा से ज्यादा बनाएं।
जैसे मैं कहती हूँ एक और सेंटेंस है, एक और सेंटेंस है, he wanted a medication that was prescribed by the doctor, right? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? Or prescribed by the physician. So that was is basically to be, ठीक है? So आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, he wanted a medication prescribed by the doctor. So instead of using that was और that का यूज भी थोड़ा सा कम करें, ठीक है? Using of or overuse of that, who, which, and relative or other relative pronouns can make the text boring and it can make the text static, ठीक है? So like by avoiding these static sentences or by removing these static sentences, by going for the real doers or the real subjects of the text, we can somewhat like we can achieve conciseness to some extent, right? I hope this is clear for conciseness के जैसे हम कैसे उसको avoid कर सकते हैं. So there can be expletive explanations जो है हमारे पास ऐसे sentences है, restrictive and non-restrictive clauses में जो non-restrictive clauses है and the redundant phrases that we normally use in our sentences, उनको हम avoid कर सकते हैं, ठीक है? Now there is one thing I want to say कि when we write novels and stories, we go for such like we can even break the rules or grammar rules, लेकिन जब हम कोई proposal लिखते हैं या फिर हम reports लिखते हैं, so reports और proposals जो है ये हमारे पास technical writings होती है, right? So when we go for writing applications, proposals or things like that, we normally avoid such explanations, ठीक है? जब आप कोई story write करते हैं या फिर आप कोई for example, if you are writing a novel or like these writers can go and they can break the rules, or sometimes the poems as well. Poems में भी हम ऐसे characteristic जो है देते हैं जो normally those characteristics are related to or they are specifically used for people, लेकिन हम उनको कभी-कभी जानवरों को वो characteristic we relate to them, sometimes with plants, sometimes with other living things, sometimes with non-living as well. So it is just the permission is given to poets and the permission is given to novelists and storytellers कि वो कर सकते हैं, ऐसे use कर सकते हैं. But when it comes to technical writing, right? So you need not to use, or the overuse of such things can make it boring and static, and people cannot just sit and read your text, or they do not have that much time, ठीक है? So you can at least you can bring somewhat conciseness in that. Now I want to have the same text, ठीक है? We were reading about conciseness, and I told you that how to bring conciseness in the text, ठीक है? So right, it was conciseness.
Avoid wordy expressions, include only relevant material, unnecessary. You can read it from there. जो जितने बाकी examples है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं. I want to explain another another C, which is consideration. Consideration is basically to consider the receiver's interest or intention. It is very important in effective communication. While writing a message, you should always keep in mind your target group. Consideration is very important. C among the 7 C's. Like when you are making a product or a machine या कोई भी चीज हो, ठीक है, you always consider the people's interest. You should consider the people's interest, ठीक है, क्योंकि what they want to buy, you will have that in your mind to create or to make such thing कि जिनकी demand ज़्यादा हो, ठीक है. So the same is needed for every text when you write or when you are speaking. Try to consider the people's interest. When you go or when people are considerate, right? When you go to their offices, when you meet them, they will always listen to your stance, what you are thinking. They will always keep himself or herself into your shoes. They will always stand in your shoes just to see the particular idea from your perspective कि आप उस idea को कैसे देखते हैं. Even if they aren't agree with the same perspective, they will always just see कि how do you think about that idea, ठीक है. They won't go for prescription of the things. They will suggest. They will always suggest things, ठीक है. तो suggest करेंगे कि no, that thing is not important, that is not this way. लेकिन वो आपको I mean like they will always just get himself or herself into your perspective, and they will say they will sometimes use this we and I pronoun कि अगर कोई चीज ठीक भी नहीं है, so they will just go for the I and we pronoun, और वो खुद को भी मिला लेता है आपके perspective के साथ, ठीक है. So you won't understand कि आप गलत कह रहे हैं, बल्कि आप कहेंगे कि हाँ आपका perspective थोड़ा सा गलत है, ठीक है. So consideration is very necessary in every writing, ठीक है. Focus on you instead of I or we pronoun. Show audience benefit or interest of the receiver. Emphasize positive, pleasant facts. Using you help you, but overuse lead a negative reaction. Now there is an explanation. जब आप कोई एक like when you are an employer या फिर you are the manager or you ask somebody to make a report, और वो रिपोर्ट बना लेते हैं and it is not having the same information you wanted, ठीक है. और आप उसको if you are a considerate employer or a manager, you would say, you would have a blunt response or feedback. You would say this is not the real thing I wanted, ठीक है, or you have written it in a that way or the way I wanted or things like that, ठीक है. तो जितने भी ऐसे लोग हैं जैसे प्रोफेशनल एक एटीट्यूड है, in the professional attitude you will always go for such pronouns and you will always analyze the context के where to use this I pronoun, where to use this you pronoun, ठीक है. तो इन्हीं सिचुएशन में when you see कि उस बंदे ने काम अच्छा नहीं किया हुआ, so you the pronoun like you use would be I and we. अगर आप कहते हैं कि उसने अच्छा किया हुआ है या फिर you want to just go for their desire, ठीक है. अगर किसी को congratulatory message है and you are sending that message to him, so try to use this you pronoun because this is not you but this is him or this is her that has done a great work, ठीक है. और so as I was saying, there are some examples. Always write a message in such a way how audience should be benefited from it. E.g. we attitude कैसा होना चाहिए, कैसा होगा और उसका effect कैसा होगा. I'm delighted to announce that we will extend to make shopping more. Now this is a sentence. If you write this sentence on your shop, ठीक है, if you are working in a shop and you write this particular sentence in a in the front, ठीक है, तो I'm delighted to announce that we will extend the shopping to make shopping more. है your attitude कैसा होगा, you will be able to shop in the evening with extended hours, ठीक है. So over here it is more effective and it is more positive because you are using you pronoun, you are benefiting people, you are just targeting their desires
राइट एक तो आपने टाइम भी मेंशन किया हुआ है, एक्सटेंडेड आवर्स भी है. नाउ इन द फर्स्ट वन दैट इज नॉट दैट मच इफेक्टिव, दैट इज नॉट अट्रैक्टिव. ठीक है, आप डिलाइट हो रहे हैं, इफ यू आर इन डिलाइट सो ठीक है, फिर आप बंद भी कर सकते हैं, इट इज हिज और हर चॉइस. ठीक है, जो वो बंद कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे it is over here the time is given and it is you attitude. In such cases you attitude is very effective. ठीक है, it is excellent and it is positive as well. ठीक है, and it is attractive as well. लेकिन अब जब हमारे पास when we have other situations, जैसे हमारे पास एक और है ये कंक्रीटनेस से पहले एक और एग्जांपल था, लेकिन वी विल रीड दैट एग्जांपल इन courteousness कि courteousness क्या चीज है. तो consideration में you consider the like you consider the needs or you consider the desires of the people. ठीक है, we will read about more about consideration in courteous कि courteous attitude क्या हो सकता है. Now concreteness is basically the we can say the facts and figures in your message, right? It is basically when people say something and they do not have justification for that. ठीक है, when you are saying all women are wicked, all women are wicked, या फिर आप कहते हैं कि all men are wicked. ठीक है, और तो do you have any justification for that? And it is just a sweeping statement that you make, right? So when you are making a statement, you should know that what you are talking about, whether you have a logical reason for that or not, right? Whether you will justify that thing, because if you are saying that statement और वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, so they will start questioning you whether you have the answer for those questions, the statement you are making, right? There is another example as well. हम कहते हैं कि for example if you a topic is given to you for an essay, जैसे मैं कहती हूँ कि can Pakistan afford more provinces? Now this is a question which is an argumentative essay. You have to go for the arguments, you have to justify yourself. ठीक है, तो जब आप if you are going for a yes question, that yes answer, that yes Pakistan can afford more provinces, so how? Whether you have some logical reasons for that, because then you have to justify your statement. आप बहुत बड़ी बात कर लेते हैं कि yes Pakistan can afford that. So for that you need to have some justification, you need not to beat about the bushes, and you need not to use this sweeping statement. Then it becomes a sweeping statement when you do not have justification for that. So concreteness is basically just to use specific things. Do not use some generic ideas or generic statements, क्योंकि जब आप statement देते हैं उसके लिए you need to have the supporting details as well. जब आपके पास supporting detail नहीं है, आपके पास justification नहीं है, to do not make any statement anywhere. और तभी लोग फंस जाते हैं जहाँ when they talk in presentations and when there are gathering, when there is a body of audience, and when they talk about such statements, they always ask by the people कि आप जो बोल रहे हैं whether you have justification for it. So instead of using generic or irrelevant information, try to go for facts and figures. Always go for facts and figures. And I must tell you one thing, when we use facts and figures in our language, it creates a very good image about us. Thinking about your background, educational background and things like that, कि you are a good reader, you are a good observer, और आपके पास बहुत एक knowledge है about the daily life, और आप I mean like you go for achieving information, you always go to receive information about things, क्योंकि जब आप facts and figures provide करते हैं, जाहिर बात है people will always be we can say you will always impress people, क्योंकि जब facts और figures एक चीज के पास मतलब you provide with that statement, तो लोग
people will start thinking about you कि you are a good reader और आपके पास बहुत सारे knowledge है, you can justify things like this, ठीक है? So use specific facts and figures, choose image building words, ठीक है? अब एक general idea है, there is an example, he is a very intelligent student of class and stood first in the class. Now this is a sweeping statement and it is a very generic statement. Sweeping नहीं है, but generic है. Sweeping statements वो होते हैं जो बिल्कुल यूज ही नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब ये एक जनरल आइडिया है, आप बात कर रहे हैं कि ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय बट यू डू नॉट नो why is he intelligent, why he stood first in the class, right? So now the concrete message would be Ali's GPA in BSc mechanical engineering this session was 3.95 out of 4. He stood first in his class, okay? Now you are adding facts and figures that he is the student of this particular engineering, his name is this, he was in this session and he has having this GPA or that's why he stood first in the class. Now this is such a simple example, लेकिन इसमें सिर्फ facts and figures है और इस वजह से people you will justify the thing कि he is an intelligent boy, ठीक है? Always write on a very solid ground. It should definitely create good image as well, right? So it was all about this concreteness. The concreteness में हमेशा you need to go for the facts and figures क्योंकि facts figures जो है इसके अलावा you cannot justify the thing or do not go for such statements जो आपके पास उसके लिए justification नहीं है, right? क्योंकि लोग फंस जाते हैं. Clarity is basically how much you like, how much clear you are in your text कि जब आप write कर रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं तो आपके पास familiar words हैं, आपके पास precise words हैं. Familiar construct effective sentences and paragraphs. Effective का ये मतलब है so you need to analyze the context for whom you are writing. जब आप write कर रहे हैं क्या उन लोगों को इस चीज की understanding है, whether they understand that text. So there are two cases, it can be more than. For example, if you are writing a proposal for a scholarship or if you are writing a personal statement for a scholarship, so you can go for some strong words, ठीक है? You use some strong English और फिर English नहीं अगर कोई और language भी है, so you need to go for strong words or strong vocabulary or bulky vocabulary. लेकिन अगर आप किसी भी ऑफिस के लिए, for example, if you are writing an application to anybody who is sitting in an office और ऑफिस में जितने भी लोग होते हैं you might have seen उनकी इतनी एजुकेशन नहीं होती, ठीक है? ऑफिस में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चेयरमैन के पास भी इतना नॉलेज नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि those people who aren't highly educated, जिन्होंने PhDs नहीं किए हुए हैं, जिनकी थोड़ी सी एजुकेशन कम है, so you have to look at their level, you have to consider them, you have to put yourself into their skin के उनको इस बात की समझ आएगी कि नहीं है, because the first question is to understand the text, then you can get a feedback. अगर उनको इसकी समझ ही नहीं आती, so what is the need of using such strong vocabulary, what is the need of preciseness then, ठीक है? So you need to be clear in your text, you need to use such familiar words which are understandable for them, which are familiar to them, right? Now familiar words can be, after this is a very simple example, लेकिन इसमें ऐसे बहुत सारे ऐसे अल्फाज होते हैं जो लोगों को समझ नहीं आते, ठीक है? After example, e.g. pay, remuneration, invoice, statement of payments, right? So जो next familiar words है ये थोड़ा सा familiar है, ये ज़्यादा familiar है. So when you know that the person is highly educated, go for this one. Or if you know कि वो context कैसा है, go for this one because that is more familiar. People just understand that. Now courtesy is basically the politeness that you bring in your tone. Or tone आप written or spoken communication in both the medium or in both the media you can use this. लेकिन politeness जो है या फिर जो courteousness है, it should be real. Like you cannot say कि जब आप you have mechanical insertions, जैसे when you have like just insert some mechanical statements, जैसे मैं कहती हूँ thank you or sorry or please or excuse me or things like that. So these are the mechanical insertions that we normally use in daily conversation के जब आप sorry बहुत जल्दी बोल देते हैं, जब आप thank you बोल देते हैं, जब आप please करते हैं.
So these are the mechanical insertions you should use, but you should be really courteous. आप सिर्फ मुंह पे courteous अगर है and you are wicked internally, so या फिर आपके ज़हन में वो चीज़ नहीं है, तो then you aren't a courteous person, ठीक है? Although these are socially accepted manners, ठीक है? तो आप use करें, लेकिन really करें. Rather, it is politeness that grow out respect and concern for others. So you should respect people. You should have a particular tone. Okay. How to generate a courteous? You should be tactful, thoughtfulness, and you should be tactful, thoughtful, and appreciative. Okay. There are two examples that I want to share with you. Tactless or blunt. More tactful. जब आप courteous होते हैं and when you write thing and people do not understand, and when they write things to you, when they speak something and you do not understand, तो आप कैसे आपका tactless या जो आपका blunt एक जवाब है या response है वो कैसा होगा? Stupid letter, I can't understand it. ठीक है? So this is basically a very blunt response. आप उसको tactful तरीके से भी कर सकते हैं, right? People who are aggressive, they are tactless and blunt, they would go for this particular response. लेकिन जब ज़्यादा tactful होगे वो कहेंगे I should understand it as there is no confusing word in this letter. Could you please explain it once again? Now, and in this sentence, could you please explain it once again? He is making the person write it again, right? अब यहाँ पे भी वो लिखेगा, लेकिन यहाँ पे this is a very blunt explanation or response to the person, right? And this is not a courteous one. ये बड़ा courteous है. You are making the person writing the thing again, लेकिन थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप कहते हैं. It is your fault that you did not properly read my latest facts. Sometime my wording is not precise. Let me try again. ठीक है? अगर आप इस तरह response देते हैं, that's a blunt one. इस तरह देते हैं, it's a more tactful. ठीक है? So you should have tactfulness in your wordings. Correctness is basically your language, your spelling, your grammar, your punctuation, everything should be correct. जब आप punctuation का सही आपको तरीका नहीं आता, how to use punctuations. अच्छा, I want to give you an assignment, लेकिन चलो ठीक है, मैं assignment को पहले बना लेती हूँ topic, तो फिर मैं I'll upload that assignment. ठीक है? उसमें like you see in correctness, at the core of correctness, it is proper grammar, punctuation, and spelling. ठीक है? The use of punctuation is necessary. By avoiding use of conjunction, you can use punctuations, right? जहाँ पे हम conjunction use करते हैं, जैसे हमारे पास and है, but है, ठीक है? So when there is a list of word, for example, मैं कहती हूँ apple, banana, और colors की अगर मैं कहती हूँ red, blue, black and things, ठीक है? तो जब मैं इस तरह के कह देती हूँ when there are from the same categories, what we do is that we either put a comma or we either put a conjunction. So how to avoid overuse of conjunction, we put commas, ठीक है? तो commas use करते हैं या फिर semicolon use करते हैं. Avoiding overuse of conjunction, we use punctuation marks, ठीक है? So it is a homework for you कि आप जरा punctuation के especially semicolon, colon, comma और जो dash है, these are very important, and comma और semicolon तो बहुत important है. Where we use semicolon, where we use comma, ठीक है? तो आप please इनको जरा read कर ले दोबारा और हर वक्त read किया करें. If you do not know how to use these punctuations, try to at least give it a reading after a month. ठीक है? क्योंकि हम भूल जाते हैं where to use it properly. However, message must be perfect grammatically and mechanically. The term correctness is applied to business messages also means, as applied to business messages also mean three characteristics. Use the right level of language, क्योंकि substandard और formal और informal language है हमारे पास. Informal language you can use it with your colleagues, friends, people like them. अच्छा, हमारे students एक और बात भी करते हैं. मैंने
there was a student and he was saying, Money madam, that's dumra number kami. This mala is used with your, you can use it with your friends. Okay, so this is sometimes this informal language is a substandard language. Okay, now that is in Pashto. Mala, you can use this word with your friends. Okay, अब फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या है? फॉर्मल इज पार्टिसिपेट, जॉइन लेस फॉर्मल है ascertain, find out, and utilize, use, interrogate. ठीक है, अब सब स्टैंडर्ड क्या है? सब स्टैंडर्ड हमारे पास ये भी है कि हम कहते हैं and. When we use and, modal auxiliaries शायद आप लोगों ने पढ़े, जैसे should, would, ought, or ought to, right? So these are basically the modal auxiliaries. Now in the modal auxiliaries we make contracts. जैसे हम कहते हैं couldn't, shouldn't, can't, right? So they are acceptable. वो उनको हम accept कर सकते हैं. लेकिन अगर हम and use करें, so this is not acceptable in writing. Isn't आप use कर सकते हैं, aren't use कर सकते हैं. Can't, hardly is basically a adverb है which is not used with can't. It can be used with can hardly. Aim to proving, जब आप to लगाते हैं it is infinitive, तो उसके साथ पे हम present participle नहीं लगाते, but it should be the first form of the verb. So aim to prove. Desirous of है, desirous to नहीं है. So using the correct level of the language. अब stoled क्या है? It is stolen. So those form of verbs which are like you can make them with by adding ed, by making the second and the third form of the verb. If you can make that by putting ed, that is basically the regular form of the verbs. But अगर आप उसको जैसे हमारे पास है begin, began or began, ठीक है? So these are irregular verbs. So try to see कि you are using irregular or regular verb, और वो ed से बनता भी है कि नहीं बनता, ठीक है? So these were just examples. शायद आप लोग को समझ आई है. I hope this is clear now. Yes, ma'am. ठीक है, अब आप इसके बाद जितने भी हैं आप पढ़ ले, तो जितने भी इन डॉक्यूमेंट में एग्जांपल्स हैं, और कभी कभी हमारे पास ऐसे लैंग्वेज है जैसे हम एक्सेप्ट है इन जो सेम साउंडिंग वर्ड्स है, हाउ वी यूज देम, वेयर वी नीड टू यूज. अगर सेम साउंडिंग वर्ड्स है एंड वी यूज वन इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट वन, तो इट विल जस्ट change the whole meaning of the text. ठीक है, so you have to use them correctly. अब हमारे पास कुछ students होते हैं वो ऐसे use करते हैं anyways. It's not anyways, it's anyway, right? अब कुछ हैं जो towards use करते हैं, it's toward, it's not towards. ठीक है, eligible or eligible. Eligible means is someone is not eligible for something. Eligible is when you are capable or able to apply somewhere. ठीक है, जैसे besides है, besides is basically a conjunctive adverb. ठीक है, इसको besides mean except. जैसे मैं कहती हूँ he wants to learn English, Pashto except Urdu, और तो इसकी जगह मैं यूज करती हूँ besides Urdu. ठीक है, and beside is a preposition, और besides और beside में फर्क है. So you have to look at these words as well, how to use them. I hope this is clear for today. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम. कोई क्वेश्चन हो तो आप अभी पूछ सकते हैं. जी मैम.